Hello everyone, welcome to Voice of. सो वर्तमान खरार ताती तो बराबरी चलती समस्ते जान पारे कि ଯାଇଛି तो मार्च मास पर जेबे हमें अप्रैल रे नाउ वी आर इन अप्रैल तो अप्रैल मास रे जेते 2023 को हमें कोचे तो द फर्स्ट हाफ द अप्रैल हीट वेव्स ऑलरेडी स्टार्टेड द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया खास करके हमें देखा दैट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे हीट वेव्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइछि तो हीट वेव्स कोन एग्जैक्टली हमें देखबा तो ये गोटे इमेज तुम देखि परिबो हीट वेव्स कोन ना आईएमडी अनुसार जदि हमें देखा आगे तो हीट वेव्स देखिदबा कि ए वर्ष हमर जो हीट वेव्स हमें देखिबा इंडिया रो दैट मींस दिस वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया रे हीट वेव्स बहुत ही ज्यादा देखा जाउछि बट द हिल स्टेशन जदि हमें हिल स्टेशन ऑफ इंडिया को हमें देखिबा द हिल स्टेशंस आर एज ऑफ नाउ डिवर्ट्स ऑफ द एनी काइंड ऑफ हम कहबा हीट वेव्स तो एठी हीट वेव्स देखा जाउ नाही तो आईएमडी प्रेडिक्ट्स करिछि कि जो अप्रैल मास रहिछि मार्च और अप्रैल मास रे हीट वेव्स टिके अधिक रहिबो है ना ऑब्वियसली हम वेस्ट खास करके दिस रीजन एंड वेस्ट सेंट्रल एंड द ईस्टर्न कोस्ट बहुत ही सारा हीट वेव्स हबार चांसेस अछि खास करके अप्रैल 13 रो हम देखिबा अप्रैल 19 रो ओडिसा रे मते हीट वेव्स हबार अछि तो अप्रैल हम कहबा मिड एंड लेट अप्रैल रे मते हीट वेव्स ओडिसा रे भी हबार चांसेस बहुत ही अछि आईएमडी प्रेडिक्ट्स करचंती तो आईएमडी अनुसार जदि हमें देखिए हीट वेव्स देखो हीट वेव्स यूपीएससी रो बहुत फेवरेट एरिया एंड ऑलरेडी हम कहबा ओपीएससी पाई भी मध्य ये बहुत ही इंपोर्टेंट एंड ता व्यतीत मध्य हमर जनरल अवेयरनेस रहिबा बहुत जरूरी हीट वेव्स कोन बिकॉज हीट वेव्स कोन होता है कि ये गोटे वन टाइप ऑफ नाउ डिजास्टर रे कन्वर्ट हो जाइछि वन टाइप ऑफ डिजास्टर कन्वर्ट हो जाइछि तो हीट वेव्स को हमें डिफाइन करबा बहुत जरूरी सब जिंस रे डेफिनेशन रहिबा बहुत जरूरी सो आईएमडी डिफाइंस करूचे हीट वेव्स are or it's a what heat waves in quantitative and it would be also that is the quantitative terms ताको IMD terms that is defines करंती और in terms of जेतरे हम देखिबा qualitative heat waves is condition when the air temperature becomes fatal to the human body when it exposed so that is the qualitative when it's the quantitative means amount when it comes to the quantitatively it is based on the temperature threshold so this is the what temperature threshold तो IMD अनुसार यदि हम देखिबा दुईटा डेफिनेशन गोटे रहबो हमर क्वालिटेटिव डेफिनेशन गोटे रहबो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन so quantitatively the heat waves is based on the what temperature threshold over a region in terms of the actual temperature or its departure from the normal गोटे एरिया रो नॉर्मल टेम्परेचर टू केते डिपार्ट होचे मेताको बा डिपार्चर record करा जाउछि that is the what quantitatively measured cause and qualitatively when is a condition or the atmospheric condition or the temperature that would be fatal to the human beings when the body is exposed to the atmosphere okay तो ये हमें दीटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सो क्वांटिटेटिव को जदि हमें फोकस करबा क्वालिटेटिव को जदि मु छाडी देबी इफ आई फोकस टू द क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया और द डेफिनेशन ऑफ द हीट वेव्स सिंपल कौन सी जगह जदि हमें 40 डिग्री टेम्परेचर जो अधिक होची प्लेन रे देन दैट वुड बी द हीट वेव्स that means deviation 2 to 4 degree deviation of the temperature from the normal temperature let's say puri ro coastal area re summer re normal temperature thai 30 degree if the temperature goes to 35 degrees celsius that means it would be terms as the heat waves in the coastal region of puri so let's say for the that means hame jo koche 2 to 4 degree temperature most part of the country hame कहबा जोटा कि deviation was that could be 5 degree हे 10 degree हे जा भी पारे so deviation जदि हमें predict करबा that means I mean, the weather department has also predicted the gradual rise of the temperature 2 to 4 degrees Celsius most of the parts during the next 2 to 3 days. IMD कहछि फ्राइडे दिन कि मैक्सिमम टेम्परेचर 38 टू 30 40 डिग्री भीतर रहबो जेमति भुवनेश्वर आमे देखबा लेट्स से द प्रेजेंटली व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द 9th of April मु कहबी द टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस रहउछि 37 38 डिग्री टेम्परेचर हमको देखा जाउछि खास करके महाराष्ट्र ओडिशा गुजरात ये सब रीजन रे कर्नाटक कथा है इंटीरियर पार्ट ऑफ तेलंगाना ये सब रीजन रे केते देखो लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर रहिबो है ना बिकॉज सन समस्त जानछो कि जेतले हमरो समर सीजन थाए सन कोन थाए सन वुड बी अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन्स टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अप टू 23 एंड हाफ ये तो समस्त जानछो सो बिकॉज ऑफ द समर सॉलिस्टाइज होबा पे जाउछि जून 23 रे समर सॉलिस्टाइज हेचे जेतले तमरो सन पूरा ओवर द हेड ऑफ द ट्रॉपिकल
दैट इज अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर रहइबो से समय बहुत ही ज्यादा खरा होते एंड गुली गुली मध्य होता है तो Karnataka, parts of Karnataka, Telangana, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, all these regions, Gujarat also going to be Chhattisgarh. These are regions where going to what they are going to experience the deviation of the normal heat and normal temperature to the abnormal temperature देखा जाओ तो प्लेन रे जदि कौन सी एरिया 40 डिग्री टेम्परेचर होची ताको कहै छै हीट वेव्स आ जदि हम हिली रीजन रे 30 डिग्री टेम्परेचर ले ताको कहै छै हीट वेव्स दैट मींस नॉर्मल टेम्परेचर हो ना 2 to 4 डिग्री और 5 डिग्री डेविएशन हमें ही परिबो डेविएशन ही परिबो दैट कुड बी 10 डिग्री ही पारे that means plain time heat wave settle kaba jetro 40 degree celsius rochi hilly region re it would be like the 30 degree the heat waves khali land upar हुए सेमती किछि माने ना heat waves मत marine heat waves मत देखा जाउची ना तो that means आमे देखिबा ए heat waves is a prolonged condition heat waves अर्थ कोन गोटे 2-4 दिन गोटे बा 2 रु 3 दिन हे परे 3 रु 4 दिन हे परे 4 5 दिन हे परे गोटे prolonged condition the period of unusual high temperature of a region कोन गोटे region रो interestingly there is no universal definition for the how high okay or how much high केते दरकार बस हमें 2 रु 4 कहि परबो 10 डिग्री बस नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री प्लेन पई 30 डिग्री हिल स्टेशन पई एति तुमको मन रखा पड़िबो एंड सेट ओके ये हमको देखा पड़िबो ठीक अछि सो जनरली 10 डिग्री और मोर एबव द एवरेज जोटा कि लिखे छी एमिति किछि नै जनरली हमर 2 to 4 डिग्री कहि परिबो 5 डिग्री 10 डिग्री जा पे नै परबो ओके ठीक अछि हमें नै जो 10 डिग्री नै जो आज पर द करंट सिनेरियो अनुसार हमें 10 डिग्री नै जो और डेविएशन और that would be great deviation from the usual temperature of that particular place then what is the cause of heat waves ताले heat waves हमें जानिले कि कौन सी जगह टेम्परेचर थ्रू जति हमें 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी जाउछ अचानक 2 रि 4 दिन से कंडीशन सेमती प्रिवेल्ड करूछ तो प्रोलॉन्ग कंडीशन प्रिवेल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर area or the geographical area that region would be terms of the heat waves is prevailing on that particular area so for example the 40 degree temperature is been having the criteria for the plain region and 30 degree for the hill station region so then ये भी क्वेश्चन आसुची कि heat waves हबार कारण कोन तो summer season asle heat waves can be and why not all the region experience the heat waves at a given point of time this is a given point of time then all region that what I would say don't experience the same temperature let's say the hilly regions they are not let's say the island region they are not then कौन पाइबे and here I will show that condition the condition is here you can see the heat dome जाको हम कहबा heat dome okay so that would be heat dome for example let's say गोटे अमेरिका रे गोटे तमरो इमेज ता बनाइछि here is the that is the what central american plain जाको कहआ जे because this side is rocky mountain this side is appalachian mountain these are the coastal this is the central plain जाको हम कहउछे the central plain of and america okay ये जदि देखबो एटमॉस्फेयर तळे जदि लो प्रेशर अछि ऊपर जदि गोटे तळे लो प्रेशर अछि नो डाउट बट जहाँ भी हो गोटे जदि तमरो एटमॉस्फेयर ऊपर जदि हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करूची दैट विल एयर विल सबसाइड एयर कोन करबो सबसाइड करबो और दैट आमे जाको कहबा डिसेंडिंग ऑफ एयर मास तो जदि ऊपर एटमॉस्फेरिक कोनसी प्रकार जदि एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप करिछि ओवर ए कोनसी जेमते कि ये प्लेन एरिया अछि आरो ऊपर एटमॉस्फेरिक ऊपर गोटे हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप करिछि दैट विल सबसाइड द एयर इनटू द ग्राउंड को एयर सबसाइड करबो सो दैट एयर जो हीट वेव्स गुडा आसीबा कथा जो हीट जोटा ट्रांसफर हो कथा एटमॉस्फेयर को से जाई परिबनी ए ट्रैप हिजबो दैट वुड बी ट्रैप जो हीट गुडा कोन रहइबो द हीट वुड बी ट्रैप्ड देयर सो दैट जो हीट ता एक्सपोज हे परिबनी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हे परिबनी ता द्वारा कोन हीटिंग इफेक्ट धीरे धीरे बढ़िबो पूरा गोटे आछे गोटे डोम कंडीशन विल प्रिवेल heat dome will prevail, humidity will increase, temperature will increase, oppressive condition will fail. Only and until that high pressure is not removed, that heat condition will prevail. So atmospheric condition is the main reason for the prevailing of the heat waves. So that is the main reason jodi ame dekhiba heat waves are happens when there is a trap of air jota ame कहले कि trapped air that feels like inside the oven जेमति हमको लगियो पूरा गोटे गैस चैम्बर में रहि जाइछे हीट चैम्बर रे रहि जाइछे high pressure that air subsides or downward move कराए ता द्वारा कोन जो पूरा हमर जो हीट एयर जो हॉट एयर होची से au ग्राउंड रो राइज करके ऊपर को जाई परबो नै that would be prevented the air near the ground from the rising the shrinking air like a cap that would be like a cap and traps the warm air in the ground and without rising the air and there is no rain because of the high pressure जेतो high pressure che rainfall तो हबनी and nothing to prevent the hot air from the getting hotter okay so that means हमें कहबा
So तेणु करके कौन condition will vary of pressure condition would be there. That means the high pressure खाना जानते हो without low pressure हमरो rainfall ही परिबो नहीं. So this is the main reason climatic region हम केवा or the atmospheric condition. Now how to keep yourself safe during the heat waves? Heat waves तो हवा को होती. That means natural calamities we can only minimize the impact. देखो natural calamities the disaster को हमें avoid करी परवानी. We can only minimize the impact of that disaster. Like you have to drink the sufficient water. Okay. Even when you are not thirsty, you have to stay away from the that is what caffeines like this one. Caffeine kitchen niyantu nahi. When outdoors, succeed and cover your head. Head को सबले cover करके रखंतु. काम न पड़िबा जे बाहर को जानते नहीं अत्यंत आवश्यक पड़े बाहर को जानतु. Shade देखंतु गछर shade रहय पे keep calm circulating in your home रो hydration रहबा दरकार. Shade are the key and shade area रे रहबा दरकार. Someone shows signs of the heat stroke, seek treatment immediately. ताको heat stroke जदि आपन लागुची मुंड बलिबा जे झिमझिम हबा heat stroke हे पारे. Then आमे देखिबा throughout a heat waves keep yourself cool and hydrated. This is very ये तुम्हें watermelon नहीं पड़े cotton dress पिंधे पर sun glass use करो sunscreen use करो cap use करो okay है ना avoid that is alcohol caffeine sugar these things को avoid करिया दरकार. Okay better अपन लस्सी नहीं परिवे shower नहीं पर sorry shower नहीं परिवे बात करी परिवे ये सब किए कोची WHO. These are talking about the WHO कहउछन कि these are the ways कम खातु पानी अधिक पियंतु. These are the some of the steps हम जाको द्वारा प्रिवेंट करि परिबा. Throughout the heat waves आपण कोन करे घरे रहि के रेस्ट नै परिबे बेटर फिजिकल रेस्ट नियंतु. स्टे सबले घरे रहि पे चेष्टा करंतु. आउटसाइड जो एक्टिविटीज अछि ना ताको अवॉइड करंतु. डूइंग any kind of activities outside please prevent it and always try to minimum or to expose yourself as minimum as could be. Avoid tremendous physical activities if you can. Don't leave children or the animals in the parked vehicles. Parked vehicles because that would be a gas number hichbo. WHO guidelines. So heat exhaustion देखा जो heat stroke ही परे. There would be heat stroke द्वारा बहुत लोगों sunstroke है जे faint है परे dizzy है परे sweating है परे muscle vomiting है परे cramp है परे muscle pain है परे. These are है ना ये सब red dot है परे body रे सब red dot as जो screen dry है जो vomiting रहबो. So these are the repercussions going to be. Okay, hope this lesson would be informative. how तम मन को help मते करबा आको मध्यम थी informative video नहीं को मैं सो ऐसा परे. Please don't forget to subscribe and share. Thank you everyone.